And how do you look at this tournament? Is it definitely going to give chance to the youngsters, the seniors, and maybe it is through these kind of. Young players are also there. So yes, we see something positive for their future. Well, thank you so much and wishing you good luck. So, the team, all seasons Panthers have won the toss and they will be bowling first. They have invited Sapient Leopards to go ahead and bat first. Well, you have ever seen a fight between Leopard and Panthers? If not, then today is the day. Thank you so much.
What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. Good afternoon, friends, and welcome to Western Railway Sports Hey, live. Association's Mahalakshmi Cricket Ground, where you are watching Garwari Clubhouse presents Billmart GCH Cricket Super League 2022. And all season Panthers have won the toss, and they have invited Sapient Leopards to go ahead and bat first. We are thankful to our title sponsor, Billmart. That's it.
Our apparel sponsor JK and Company, cap sponsored Neo Design, boundaries by Allied Digital, IT managed responsibly, sixes by Samir Pete, and then balls by Eagle Infra India Limited, and man of the match by Stainless Designer Studio. check और कम कर check Sapient Leopards are owned by Rachit Bakshi, and Venture Catalyst are their team sponsor and SBI Mutual Fund. On the other end, all seasons Panthers have sponsored in 99 pancakes. So if they win this match, they would want to certainly enjoy pancakes. Both the openers are on the ground. Piyush Piyush Meghani is going to take strike, whereas Mohit Chaturvedi, who is the master of this team, is at the non-striker's end. Captain by Prithvi Kothari, vice captain Vismay Choksi. His initials also VC, that's vice captain, and Vismay Choksi. What a coincidence. First over will be bowled by Ripple from the Mahalakshmi end. Bowler at the far end. First delivery driven nicely, fielded well. This time a good delivery, played on the off square of the wicket, chance of a run out, and I think yes, Mohit Chaturvedi will have to come back. Platinum duck for him, even without facing a delivery, gets out a knot, and that's the first vital blow. Wanted a cheeky single, and Mohit definitely obliged to that call. It was played square of the wicket. But a brilliant throw towards the wicketkeeper, and first wicket gone. Sanju Srivastav giving a brilliant run out for his side, and Mohit comes back. Sapient Leopards have lost their first wicket for naught. This is a very big moment as you get wicket very early, and now skipper Prithvi comes in. Prithvi Kothari, the captain, young captain. We saw Arish Mansoori being the young captain for his side, Balasinore Tigers, and now we see Prithvi Kothari getting that leadership role for Sapient Leopards. Sometimes you get a chance to do captainship at a very young age. Nawab Mansoor Ali Khan Patodi's record was probably broken by Tatenda Taibu at the international level. Captainship has its own highs and lows. Lee Germon of New Zealand became captain even without playing any test match. So in his first match he became the captain. So these are few fact files. This time on the pads and a dot ball. Piyush and Prithvi are the opener, right now batters at the crease. Mohit Chaturvedi unfortunately got out by way of run out.
This time a confident drive, and that will race to the fence for Allied Digital 4. Prithvi Kothari, very positive body language by his standards. Captain came and straight away, if it's a loose ball, juicy half volley and super Allied Digital 4 by captain. That was a captain shot, 4 for 1. Well left, that ball angling from the corridor of uncertainty. A very useful term, 1981 Ashes. Terry Alderman took 41 wickets by bowling in and around off stump, and that's how he got that name, bowling in corridor of uncertainty. That was wide, score 5 for 1. Welcome all the viewers who are watching this live broadcast on GCH YouTube channel. Once again, playing with soft hands, piercing the gap between the two. This will be Allied. No, I think it will not happen. The relay throw. Finally, Prithvi's Midas touch. End of first over, definitely with that run out. Ripple created ripples in the water. Calm waters, 1 over 7 runs and 1 wicket. Piyush not out on 0 of 2 balls. Prithvi not out on 6 of 4. There are 2 Prithvi in focus. Prithvi Shaw in Syed Mushtaq Ali Trophy Grand Finale and Prithvi Kothari for Sapient Leopards. So next over will be bowled by Ankit. Ankit is a very good player of underarm, overarm and all formats. The tennis ball cricket and leather ball cricket. Wearing jersey number 12. Looks like Cheteshwar Pujara. Wearing jersey number 12, which was a number for Yuvraj Singh. Umpire Mihir Thakkar at striker's end and umpire Sriram Krishnan at bowler's end, with Ganesh Iyer, the match observer. So first delivery of the fresh over, and the southpaw was able to play it in the vacant area for 2 runs. Score 9 for 1. So Piyush Meghani took that single. Ankit to bowl to Prithvi Kothari. A young captain who has decided to lead his side, and when you are awarded with captainship of a team, there is an old Australian cricket saying that captain should be the best player of the side, and Prithvi Kothari, of course, he doesn't have a pressure of that performance, but at the same time he has to also take his team part the finish line.
into the channel and worked on the onside for a single. 11 for 1. All seasons Panthers captain Samir Shah, himself a very good bowler. Wicketkeeper standing well up to the stumps, about couple of centimeters wide to the off stump. This is the first ever T20 leather ball cricket tournament in the history of GCH. Oh, straight and full. Piyush not out on 3 of 6. Prithvi on 7 of 5 with the help of one Allied Digital 4. Oh, what a delivery. That came back sharply. Good use of the seam by Ankit. And we come to the end of over number 2. 11 for 1 at the end of 2. Run rate 5.5. Welcome all the viewers who are watching this telecast on GCH channel. In the first match today, we saw Balasinore Tigers winning the match by 6 wickets, and Dinesh Patel, Dino, was man of the match for his 44 runs. Dilip Agarwal became the first bowler in the tournament to bowl a double wicket maiden today. Dinesh Patel became the first batter to hit Samir Pete 6 in the tournament. What a stylish shot that is. And this will be Allied Digital 4. Marvelous timing. Technically correct shot. You would want to watch this shot again and again on your smartphone. Friendly half volley and no need to run for these shots. 15 for 1. Prithvi Kothari already has hit 2 boundaries. He's playing with positive attitude. That's very important. And stroke selection. He is choosing the loose ball for those big shots. Confident drive. Finds a fielder on the way. Wicketkeeper is Bhavik. Piyush Meghani is getting ready now. A silent innings by him so far, and we can understand that because they lost Mohit early. Swing and a miss, played away from his body. It's very important you get into the line of the ball, and straight away skipper has a bit of advice for him. Footwork was missing there. This time finding the gap, a beautiful square cut that went past gully region for Allied Digital 4. What a shot by Piyush Meghani, first aggressive shot. And 4 runs. Short and wide. There was an invitation and he obliged by accepting that invitation, Meghani. $20 for 1.
So play towards mid-off for a single. That's the right strategy. You score a boundary and take a single, rotate the strike. You would not want to underplay or overplay while batting or bowling or fielding. Allow your partner to also do something. So Piyush has caught up now on run rate. 10 balls 8. Well left. That's the art. Art of leaving the ball. 3 overs, 21 runs and 1 wicket. Prithvi on 12 of 8. Piyush on 8 of 10. Ripple 2 overs, 17 runs, no wickets. Samir Shah again handing over ball to Ankit, who will continue. Both these batters need a good partnership. Ankit reworking on his run-up. There are 4 to 5 important things for a bowler. First is his run-up, the approach towards the bowling crease, the grip of the ball, delivery stride, and follow through. These are some crucial elements. Starting with wide, 22 for 1. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. This time comes closer to the stump and force the batter to offer the shot. Limited overs game is all about bowling stump to stump, as it is a result oriented cricket. Over pitch delivery and threads the gap between the two fielders. Outfield is really fast, and this will be a light digital 4 by Piyush Meghani. It is Kothari and Meghani's show right now. Sapient Leopards, what a shot that was. A delightful moment. In Gujarati they say, Meghani kare ranoni ujani. 26 for 1. This was very well driven. I think Piyush Meghani has given good support to Prithvi Kothari. (26 for 1). Both the batters on 12. So welcome to all the family members of these cricketers who have come in big numbers today. Yeah, it's a family show. Wide ball.
Trying to play across the line, there is a loud appeal. Ankit this time pitched the ball up, and that's what he got to do consistently. Never bowl those loose balls or short and wide balls. Prithvi Kothari has settled down well. Now that Meghani has also played well, Prithvi can chill a bit. Single on the off. The righty-lefty combination posing some kind of problems for all season's Panthers. It's a month-long tournament that will conclude on the first week of December. 6 teams, 1 champion. Submarine ball keeping low, and end of over number 4. Score looks good, 30 for 1. Run rate 7.5. Piyush Meghani 14 of 15. Prithvi Kothari 12 of 9. Ankit 2 overs 13 runs and no wicket. The only wicket that fell was by way of a run out. Sanju Srivastav was the instrumental fielder in getting that run out. Wicket-keeper Bhavik getting ready, and now there's a bowling change, I guess. Bowler is Leauge. So very short spell of 2 overs for Ripple. Prithvi Kothari is the premier batter for his side, and his innings would be very important. First delivery into the channel, and played very well through the line. Single. So a spinner replaced by a medium pacer, and that's what you got to keep doing. When you rotate the batting order, you got to rejig your bowling order as well, depending on the situation. Leauge is also a very experienced player. This is indeed a golden opportunity for all the club members to come forward and play cricket, play for the betterment of GCH cricket as a whole. First time such an initiative is being taken, and it has received a great response from all the members, and this will keep growing year by year. And very soon we will be having our Golden Jubilee year in 2024, and that's where the club would be at the pinnacle of its activities. Brilliant bowling targeted towards batters' pads. Prithvi Kothari, in fact, came to strike after a long time. So that's where you got to keep your eyes on. You got to know when to switch on and switch off yourself. Switch off when you are at the non-striker end, and switch on yourself when you are at the receiving end. So some minor fielding adjustments here and there, and Leauge gets ready to bowl to Prithvi Kothari. Kothari playing on 12. 31 for 1.
Played uppishly, chance of a catch, but that ball travelled above the head of the fielder, and this will be Allied Digital 4. Fabulous 4, Allied Digital 4. Uppish in the air, but nothing to worry. There was a big jump there, but can't stop it. Prithvi Kothari, 35 for 1. Oh, what a shot that was. A hot shot by hot captain. Allied Digital 4. Using his feet so well, he judged the length of the ball so early and was already into the shot. That was probably the shot of the match so far. Steps out and shows the complete domination of bat on the ball. Prithvi on 20, 39 for 1. This time offered the shot on the offside for a single. (41 for 1). Prithvi on 22, playing a responsible innings. Piyush playing a mature innings, 15 of 16. Look at that shot now. Oh ho ho ho. High and handsome, long and strong. That is Samir Pethe 6. And with Samir Pethe 6, Panthers are in a fix. Now that is definitely a world-class hitting. (47 for 1) at the end of 5 overs. Run rate 9.40. Prithvi with a strike rate of 200. He is on 28 of 14. Piyush Meghani, he is 15 of 16. And Leauge gave away 17 runs in his first over. 2 Allied Digital boundaries and 1 Samir Pethe 6 came off his first over. And the bowling change has not worked well for the side. Last over of power play, single of the first ball, 48 for 1. So pulled away and partnership of 50 on the cards with that Allied Digital 4. 52 runs partnership for the first wicket. It's a gritty and gutsy knock by the skipper, Prithvi Kothari. हिंदी में इसीलिए कहते हैं एक कोठारी पैंथर्स पर भारी. Captain's innings, he's looking in good touch. 52 for 1, 6th over. Pushed square of the wicket for single. 53 for 1. You're watching GCH presents
Billmart GCH Cricket Super League Season 1, second match. First match won by Balasino Tigers by 6 wickets when they won against Marco Polo Lions. And in this match, all seasons, Panthers won the toss and invited Sapient Leopards to bat first. That ball hurried onto the body of Piyush Meghani, was not ready. 53 for 1. सो पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते हुए 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर 53 for 1. We are thankful to our title sponsors Billmart. That's it. Apparel sponsors by Stainless Design Studio. Cricket pad sleeves by Beetle Leaf Company. And special thanks to Venture Catalyst Group, who are team sponsor for Sapient Leopards. Officials for this match, Mir Thakkar and Sriram Krishnan. Scoring team, Arushi Temse and Prajakta Desai. Sapient Leopards are owned by Rachit Bakshi, and Venture Catalyst and SBI Mutual Funds are the sponsors. All seasons, Panthers is owned by Kiran Shetty, and they are sponsored by 99 Pancakes. So Sanju Srivastav, Sanju has also got a wide experience and he was instrumental in getting that run out. सातवें ओवर की शुरुआत होने जा रही है संजू श्रीवास्तव द्वारा. पृथ्वी कोठारी 16 गेंदों में 33 पर खेल रहे हैं. पीयूष 20 गेंदों में 16. पहली गेंद बल्ला और पैड को साथ में रखा और खेला 1 रन के लिए ऑफसाइड पर. कविश पराग जवेरी वहां पर फील्डर थे जिन्होंने बॉल दिया समीर पंकज शाह को. समीर पंकज शाह ने दे दिया संजू श्रीवास्तव को. $54 for 1, 7th over. इस बार गेंद लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर मुड़ी और विकेट कीपर भाविक ने अपने दाहिनी ओर छलांग लगाते हुए उसे रोका था. वाइड का ये रन विकेट कीपर्स के लिए ये टूर्नामेंट में एक चुनौती रहेगी. दिनेश पटेल ने दिखाया कि विकेट कीपर कितना अच्छा खेल सकता है. 20 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद वो ओपनिंग बैटर के रूप में आया और 44 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया.
ओ इस बार निपैकर और विकेट गिरा, यहां पर आउट हो गए पीयूष मेघाणी। बड़ा विकेट फांस दिया संजू श्रीवास्तव ने। कामयाब ओवर, 16 रन बनाकर आउट हुए संजू श्रीवास्तव की गेंद। एक्शन रिप्ले। बल्ले का मोटा सिरा लिया और भाविक ने खुशी का इजहार किया। विकेट गिरता हुआ यहां पर दूसरा 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन की पार्टनरशिप समाप्त होती हुई। दूसरे विकेट के लिए 16 रन जोड़े पीयूष ने। संजीव श्रीवास्तव एक विकेट उन्होंने टीम के खाते में जमा करवाया और एक विकेट अपने खुद के खाते में जमा करवाया। भाविक शाह ने वो कैच को अंजाम दिया था। सीम के सहारे बाहर कटी थी गेंद और यह संभव हो पाया। नए बैटर है हुजैफा, जिनके टी शर्ट के पीछे लिखा है हुजी। पचपन रन 2 विकेटों के नुकसान पर 55 फॉर 2, 7th ओवर। इस बार बढ़िया गेंद थी, बल्ले के मुंह को खोला। असमंजस में थे रन लिया जाए कि नहीं, लेकिन आखिरकार रन लेने का जोखिम उठाया और उसे पूरा कर दिखाया। हुजैफा ने अपना पहला रन बनाया और अब स्ट्राइक पर है पृथ्वी कोठारी। 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दो कदम आ गया। पृथ्वी कोठारी ने अपनी हुकूमत जारी रखी है। ये मेरी सल्तनत है दिखाने का प्रयास, हालांकि चौका बचा लिया गया है। बहुत ही उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन। पृथ्वी कोठारी अपने बल्ले को पैड पर मारते हुए कि यह चौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। 57 फॉर 2, 7th ओवर। इस बार थोड़ा अपिश खेला है, अपर कट, और गेंद अब जाएगी अलाइड डिजिटल चौके के रूप में मैदान के बाहर। शानदार शॉट। गेंदबाज के बॉल के पेस का उपयोग किया यहां पर हुजैफा ने। थोड़ा जंप किया, पंप किया और गेंद को आनंद फानंद में भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। अलाइड डिजिटल चौका। हर्ष संघवी ने कोशिश की लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां पर। 61 फॉर 2। इस बार बेहतर बॉल थी, लगभग यॉर्कर लेंथ की, चैनल में आती हुई नीची बैकलिफ्ट से खेला। 1 रन पूरा किया वहां पर। 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। एंड ऑफ 7 ओवर्स। 62 फॉर 2। पृथ्वी कोठारी 35 ऑफ 18, हुजैफा 6 ऑफ 3। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और अब मध्य क्रम के बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव 1 ओवर 9 रन 1 विकेट।
एक और बॉलिंग चेंज हमें शायद देखने मिलेगा और उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। स्वयं समीर पंकज शाह, इन्होंने गेंद अपने हाथ में ली है। टीम के कैप्टन के हाथ में गेंद है, लेकिन बॉलिंग कौन करेगा इसके लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं। दोपहर का ये वो समय है जब आप भोजन करते हैं और भोजन के बाद द बीटल लीफ कंपनी का पान मिले तो क्या बात है, उसका मजा लेते हुए मुखवास का मैच देख सकते हैं। सो कैप्टन अब गेंदबाजी के लिए, और स्ट्राइक पर है हुजैफा। इस बार गोल्फ शॉट और सीधा उसे खेल दिया। एलाइट डिजिटल चौका, लूजनर बॉल, ओवर पिच, और मानो हुजैफा गोल्फ खेल रहे हैं। मैं सेपियंट लेपर्ड्स के साथ निभाऊंगा वफा, मैं सेपियंट लेपर्ड्स के साथ निभाऊंगा वफा, मैं नहीं होने दूंगा किसी को खफा, क्योंकि मेरा नाम है हुजैफा। 66 पे 2, 66 for 2। इस बार फुलर लेंथ की बॉल थी, बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हुए समीर पंकज शाह। पैंथर्स का वो पैंथर जिसके ऊपर जिम्मेदारी। 66 for 2, 8th ओवर। करारा शॉट, अब इसको कहते हैं कड़क, एलाइट डिजिटल कड़क चौका। अरे बकुल भाई, जो बे चौका मारा है समीर। कड़कपन जरूरी है। हुजैफा, हुजैफा ने भी समीर पंकज शाह का भव्य स्वागत किया है। मैं निभाऊंगा ऐसी वफा कि समीर आप हो जाएंगे मुझसे खफा, और गेंद को कर दूंगा मैदान के बाहर दफा। 70 पे 2। सिंगल, 71 for 2। और देखिए अब दो कैप्टन आमने सामने आ चुके हैं, एक तरफ पृथ्वी कोठारी, एक तरफ समीर पंकज शाह। मजा तब आता है जब दो कैप्टन आमने सामने आए। आपने कई बार क्रिकेट के मैदान पर देखा होगा जब कैप्टन आपस में भिड़ते हैं, खास करके बॉलर और बैटर। फ्लाइटेड बॉल थी और बहुत ही बढ़िया ग्राउंड शॉट, और इस घास के ऊपर आग लगाने वाला ये अलाइट डिजिटल चौका। मौका था, ऐसे मौके आप खोया नहीं करते। बहुत ज्यादा फ्लाइट थी, गेंद की लाइन में है, देखिए किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया। बहुत ही शालीन अंदाज में बल्लेबाजी चलती हुई पृथ्वी कोठारी की। 75 for 2। एक रन लिया कोठारी ने। एट ओवर 76 for 2। दूसरा विकेट गिरा तब स्कोर था 55। 21 रनों की भागीदारी तीसरे विकेट के लिए हुजैफा और पृथ्वी कोठारी के बीच में आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कैप्टन द्वारा। 76 for 2। समीर शाह 1 ओवर 14 रन। वेलकम बकुल भाई। बोलो सर। बकुल मिस्त्री। मुझे गणेश अय्यर साहब ने बोला कि बकुल और रतन के 8 ओवर इंपॉर्टेंट है, और
डेफिनेटली दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिलीप अग्रवाल तो हमारे दोस्त है, द मोस्ट हैंडसम अल पचीनो ऑफ जीसीएच। जो दिमाग को रखते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, वो है हमारे बकुल, बकुल भाई मिस्त्री। पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे। $76 for 2। इस बार ओवर पिच बॉल। देखिए पृथ्वी बहुत ही कंपोज्ड इनिंग खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरा विकेट इंपॉर्टेंट है, अपने विकेट को पकड़ कर चल रहे हैं। और इस तरह अगर बल्लेबाजी होती रही तो एक बड़ी पारी 40 पर पहुंचे पृथ्वी। 20 गेंदों का सामना किया है। इस बार टप्पा खाकर बाहर की जानिब कटी थी गेंद। लेग कटर्स। भारतीय हवामान में गेंदों का स्विंग होना ये थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन सीम के सहारे अच्छी गेंदबाजी आप कर सकते हैं। और संजू श्रीवास्तव, कुछ मौकों पर हमने उनको कोच के रूप में भी देखा है। इस बार मिस टाइम किया है हुजैफा ने। कैच का मौका और बाजू में गेंद गिरती हुई समीर के, और 1 रन। अब तक इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर दिनेश पटेल के नाम रहा है 44 रन्स का, और वो रिकॉर्ड अब टूट सकता है इस मैच में। पृथ्वी कोठारी 41 पर नाबाद। दो कदम आगे आए और वहां पर स्ट्रोक बहुत अच्छा था। देखिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। आपके मोबाइल में नेटवर्क और बैटिंग में फुटवर्क दोनों जरूरी है। 78 for 2, 78 पर 2। इस बार कैच का मौका था कलाबाजी लगाते हुए। जी हां, विकेट था नहीं लेकिन उसे बनाया गया ऐसा हम कह सकते हैं। और आउट होकर वापस जाना पड़ेगा वहां पर कैप्टन को। संजू श्रीवास्तव को मिलती हुई है सफलता। और क्या कैच लिया गया है वहां पर, अभी भी जमीन पर गिरे हुए हैं। देखिए भाविक अब आउटफील्ड में आ चुके हैं बतौर फील्डर। और भाविक के ग्रे रंग के टी शर्ट के ऊपर थोड़ी मिट्टी, थोड़े दाग। भाविक शाह इसके पहले विकेट कीपर के रूप में कैच लिया था, अब आउटफील्ड में बिल्कुल वो विकेट कीपिंग का तजुर्बा काम में आया। और यही वो तरीका था जिससे आउट हो सकता था कैप्टन पृथ्वी कोठारी। और कैच लिया भाविक शाह ने। ग्रे कलर के कपड़े ज्यादा मैले नहीं हो सकते, लेकिन अगर होते भी है तो दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। 41 बनाकर आउट हो गए पृथ्वी कोठारी। एक बड़ा विकेट यहां पर खो दिया है सेपियंट लेपर्ड्स ने, और उनके नए बैटर का आगमन होता हुआ। हुजैफा 9 गेंदों में 16 पर खेल रहे। पृथ्वी 41 बनाकर आउट हुए, कॉट बाय भाविक शाह ऑफ द बॉलिंग ऑफ संजू श्रीवास्तव। श्रीवास्तव को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। विकेट कीपर अब आ चुके हैं करण राज झवेरी। Ninth over in progress, 78 for 3। तेईस रन की पार्टनरशिप समाप्त होती हुई। पहले विकेट 0 पर, दूसरा 55 पर, तीसरा 78 पर। ये फॉलो विकेट्स।
नया बैटर है ध्रुवित शाह, ध्रुमिल शाह. 78 for 3. Drumin. Nine overs, 79 for 3. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1, match number 2 between Sapient Leopards and All Seasons Panthers. All Seasons Panthers won the toss, invited Sapient Leopards to bat first. समीर पंकज शाह नया ओवर करेंगे और बैटर है ध्रुमिन शाह. विकेट कीपर है करण राज जवेरी. पीला रंग का उनका लकी हेलमेट है. ऑलवेज वेयर्स दैट येलो हेलमेट. नेवर की पहली गेंद इस बार खेला वाइडिश थर्ड मैन की तरफ. 1 रन. स्कोर 80 for 3. अब जबकि पृथ्वी कोठारी आउट हो चुके हैं, देखने वाली बात यह कि हुजैफा और द्रुमीन किस तरह से इस पारी का निर्माण करेंगे, क्योंकि समीर के कोच उनको टॉस के पहले बता रहे थे कि अगर सही बैटिंग हो तो ये 170 का ट्रैक है. सो लेट्स सी. इस बार बॉल नीची रही और खेला 1 रन के लिए. थोड़ा शांत और संयम भरा क्रिकेट यहां पर हुजैफा द्वारा. बैकफुट पर जाकर पंच किया. ये एक पॉपुलर शॉट है आजकल, स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए उसे खेलना. बैकफुट पर क्रीज में डीप जाकर खेला था. तकनीकी रूप से बहुत ही सही शॉट. और अब देखिए इस बार लपेट लिया, हरकत ली और हरकत में बहुत ज्यादा फ्लाइट दी थी. ऐसा लगा मानो हवा में तैरता हुआ रसगुल्ला आया और खेल दिया उसे काउ कॉर्नर के ऊपर से. समीर पेटे 6. 82 for 3. इस बार स्वीप किया विकेटों के पीछे 1 रन और. 83 for 3. We are in over number 10. Score 89. 89 for 3 after 10 overs. So good afternoon all the listeners and welcome to this live YouTube telecast on GCH channel. As you are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League 2022. The inaugural season and match number 2. The other two teams in the fray being Cheetahs Mumbai Stars owned by Arman Malik and Jaguars of Triumph Knights owned by Akshay Bhau, whom you will see tomorrow in action. Ten overs, 89 for 3, run rate 8.90, which is a very healthy rate, and at this rate they can certainly touch 175, 180 as a bowling change. Harsh Sanghvi now gets opportunity to bowl.
Harsh Sanghvi has been a useful all-rounder. There's a term in cricket called utility player, a bowler who can bat, a batter who can bowl, that kind of a cricketer. And Harsh Sanghvi will have to certainly bowl out of his skin today. Sapient Leopards are looking dangerous at this moment. Although Piyush Meghani and Prithvi Kothari is out, along with Mohit, but these two are looking really good, especially Josefa, who's on 24 of 12. It's like a relay baton. Piyush Meghani gave relay baton to Prithvi Kothari. Prithvi Kothari, while leaving, handed over that relay baton to Josefa. That's how you run your winning race. Wide ball, 90 for 3, 11th over. A long hop and pulled away. And this will be Allied Digital 4. What a magnificent sight that was. Latched onto that shot, transferring his weight and pulling it for 4 valuable runs. That's the power of Josefa. 94 for 3. Trying to play on the onside again and gets a single. Samir Pankaj Shah has got a lot of bowling options, but I think he will have to rotate his bowlers as well. That was a bad ball, wide outside the off stump. .96 for 3. Harsh Sanghvi rolling his fingers on the leather ball. A perfectly placed shot and a single towards Harshal Shah. .97 for 3. Josefa once again punching it intelligently. This time finally stopped by Harshal, but he will get 2. Josefa, he is looking very methodical in his approach. His stroke selection has been good, and after Prithvi Kothari, this is definitely one of the powerful innings. A chance of a stump out, and yes, he has gone. Karan Raj Zaveri doesn't miss those, and he has foxed the batter, and Josefa has thrown away his wicket. 99 for 4. Partnership of 21 coming to an end. Harsh Sanghvi tantalizing the batter to come forward and play the shot, and Karan Raj Zaveri, man with electric gloves, does the trick, and 4th wicket gone. Just when Leopards were looking dangerous, they have claimed a crucial wicket. 11 overs, 99 for 4. Harsh 1 over 10 runs, 1 wicket. Josefa scores 31 of 16.
So Samir Pankaj Shah now being replaced by Kavish Parag Zaveri. And he will be bowling from the pavilion end as new batter arrives. Newman is vice captain of the team, VC, and his initials also VC, Vismay Choksi. Vismay in Gujarati means in English, it's an exclamation mark. Vismay Choksi wearing jersey number 5. Kavish Parag Zaveri finally now. And he'll be bowling to Drumin. Now this is a golden opportunity for Samir Pankaj Shah to use all his bowlers and apply some breaks on the score. He would not want this score to go beyond 150. On the other hand, Leopards would want to touch at least 160, if not more. So that run rate of 8 should give their bowlers a sigh of relief and a buffer to defend the score. Kavish tabbing the ball. This was very effective shot by Mahela Jayawardene in cricket. 100 up on the board. Hundred runs came of 67 balls by losing 4 wickets. Prithvi Kothari and Huzefa, they both played a nice innings, 41 and 31 respectively. That was on the stumps, appeal. Kavish has played at school level also. This time turning it on the onside. Vismay Choksi running in for 2 and completes it. Good running between the wicket. This is very important while scoring 4s and 6s. We should never neglect 1s and 2s. Sunny Gavaskar once told that singles are lifeline of limited overs game. (102 for 4). A slower one and judged very well for a single, under and throw. Karan Raj Zaveri finally putting a brilliant effort and stopping the ball. Bhavik Shah did a good job as makeshift wicketkeeper in his absence, but now Bhavik Shah, what a catch that he took today. Acrobatic. 103 for 4. Nice release. There is an appeal, but I think it was missing the stumps and very rightly called over. 12 overs, 103 for 4. So another feather in the cap added for GCH, as in the 48 years history, this is the golden year where they have come up with a brilliant idea of GCH Cricket Super League, and we are thankful to Billmart for being our title sponsors. As the club embark upon a journey towards its 50th year soon, this is one marquee event that will happen every year, I guess. And all the members have given their best wishes and blessings to this event.
This is event of the year for GCH. November is a good month. It's neither summer nor winter. A flighted delivery. You try to roll your wrists. 103 for 4. Wismai Choksi goes on his back foot and takes a single. Choksi has been a silent contributor. He's a resilient fighter for whichever side he plays. And he is a vice captain of this side. That was tossed up and very well judged. And this will be Allied Digital 4. Super shot. The ground shot that you would want to see. And Allied Digital 4. Dhrumin Shah on 9 of 9. I think he has taken responsibility on his shoulders. Tries to go for a big one and single. They are trying to go for 2. And this will be Allied Digital 4. So runs are coming thick and fast now for Sapient Leopards. Leopards are quick, they are agile. 112 for 4. Single on the offside. A nice little partnership now developing. Score was 99 when 4th wicket fell. Partnership of 13. Wismai trying to go. Oh, they're in double mind. There will be a wicket, I guess. Oh, direct it, and Wismai Choksi will have to come back. What a throw. Super duper throw there. Sanju Srivastava has hit stumps twice. Oh, are we seeing Jonty Rhodes here? That's what is very important. Jonty has told that you should enjoy your fielding. You can skip batting practice, bowling practice, but never skip a fielding practice. Take 5 catches close to your body. Take 5 catches in the sky. Take 5 low-lying catches. Take 5 catches to your left, 5 to your right. That's how you should enjoy your fielding practice and throwing. You can practice with leather ball, plastic ball, rubber ball, tennis ball. That's what he has even told. You can practice with golf ball. And no wonder Jonty is one of the best fielders that cricket has ever seen. Although people talk a lot about Colin Bland, but I have never seen Colin Bland. But Ricky Ponting and I think Jonty Rhodes have been exceptional fielders. 113 for 5. Sanju Srivastava, you are a man with golden arm. Believe me, if Neeraj Chopra sees you, he will invite you for a dinner. The gold medalist of Olympics, Neeraj Chopra and Sanju, you both have a goal. So, Harsh Sanghvi 2 overs 20 runs and 1 wicket, and now Kavish Parag Zaveri will bowl over number 14. Dhrumin Shah on 14 of 11. Wismai Choksi got out on 4 and New Manin.
Now slap that delivery towards Whitish extra cover. They go for single. They are converting into two. This was on the middle and leg, and in the process to play it on the onside place towards offside. Bhavik Shah, the fielder, leg by. So Dhruvit has joined Dhrumin. It's D and D. That was a beautiful delivery. It kept the batter guessing right till the last moment. Kavish Parag Zaveri is known to produce those stock balls. $116 for 5. We are in over number 14. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1, match number 2 between Sapient Leopards and All Seasons Panthers. That ball capped low, trying to thread the gap between the two fielders. That is racing to the fence. And will this be Allied Digital 4? We'll have to wait and watch. But they have started already running, and umpire Sri Ram Krishnan now signaling Allied Digital 4. $120 for 5. Stump to stump. 120 for 5 after 14 overs. Kavish Parag Zaveri, 2 overs, 11 runs and no wickets. The match is evenly poised right now because there are 6 more overs left, and even if we take 36 of next 36, the score is definitely going to touch 156 that way, and they would want to go for some big shots because they have got 5 more wickets in hands. We can expect 160 to 170. Harsh and Sangvi to bowl next over. Flighted ball, there's an appeal, but umpire unmoved. That was a good shot, a single towards the fielder. Kavish and Whitish long on. $120 for 5. This is the highest score by any team in the tournament. Of course, the score chased down was 123, so that way they are nearing that.
But looking at the first inning score, long hop and worked on the onside. That will sprint to the fans for Allied Digital 4. That was a gorgeous looking shot. And no answer whatsoever. You can't stop such shots. 125 for 5. Sapient Leopards enjoying the conditions in 15th over. Inside out shot. They will take a single. Samir the fielder, they will go for 2. Chance of a run out, but missing by whisker. He is not happy, Harsh Sanghvi. He could have hit the stumps. But that's what cricket is all about, ifs and buts. 127 for 5. Full toss ball, and this will be Samir Pete, 6 for sure. That was a baseball hit. Dhrumin Shah reminding as if he is playing baseball for Boston Red Sox. The way he hit that ball. What a batting. It's a strong batting order for Sapient Leopards. Piyush Meghani, Huzefa, Prithvi Kothari, and now Dhrumin. It's like protein, carbohydrates, vitamins. A very healthy run rate and a healthy score. 8.87 is the current run rate. 133 for 5 at the end of 15 overs. Harsh, 3 overs, 34 runs and 1 wicket. Dhrumin on 29 of 20, Dhruvit on 5 of 3, and Kavish to bowl next over. This will be over number 16. Played straight down the ground, single completed. They are trying to go for 2 and they will complete it. Straight bat shot, bowler's back drive, as they say. A very good performance by Sapient Leopards this afternoon. Magic ball. This is what Kavish is known for. He can bowl 6 different balls to you. Has got a tricks up his sleeve. That's what is called fruit salad bowling in cricket. 6 different balls. This time a brilliant shot. It will be interesting to see whether someone stops it. No, no one can stop it. It's Allied Digital 4. And with every 4, Sapient Leopards say, ye dil mange more. This is definitely going to be a high scoring game. 139 for 5. Playing with soft hands, change of pace, read very well. $140 for 5. Next milestone shall be for 160. Look at the whack. There is a fielder there. And single. Both the batters have now started playing little aggressively. They know that they are heading towards slog overs. A bit of long handle batting. 141 for 5. So single. End of
142 for 5. अपना एंड बदला है क्योंकि कैप्टन चाहते हैं कि मैं अगर अपना एंड बदलूंगा तो मेरी टीम का मैच का दी एंड है वो अच्छा होगा। 142 पर 5। समीर पंकज शाह 142 फॉर 5। 17वां ओवर का खेल चल रहा है। बैटर है ध्रुवित। 8 बॉल 13। ऑन साइड पर खेला, 1 रन पूरा किया, वहां पर उठाया और 2 रन। सबसे अच्छी बात है रनों की तलाश में रहना, रनों की खरीदारी करते रहना। आज के दिन में पहली बार 150 का स्कोर हम देखेंगे, उससे आगे भी जाएगा। 145 फॉर 5। इस बार हाथों में ताली मारती हुई गेंद चली गई, वहां पर डिफ्लेक्ट हुई और गई कविश के पास। ये अलग बात है कि हाथ को लगी इसलिए उसकी गति कम हुई, वरना स्ट्रेट जा सकती थी चौके के लिए। 145 फॉर 5। बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप यहां पर अब आगे बढ़ रही है। 146 पे 5। इस बार उठा दिया और गेंद सीधी हवा में सैर सपाटे करते हुई समीर पेटे 6। बहुत ही बढ़िया उड़न खटोला, 6 रन। वाइड बॉल और एक्स्ट्रा रन भी आएगा, गेंद भी मिलेगी। आसपास के होटलों में भी ये मैच को देखा जा रहा है यूट्यूब पर। जब से उन्हें पता चला है GCH क्रिकेट सुपर लीग की शुरुआत हुई है। 152 फॉर 5। बहुत ही उम्दा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 1 रन और पूरा किया, दूसरा हो नहीं पाएगा। कविश का हाथ अच्छा है। एक और आड़े बल्ले से ले लिया एक। स्कोर 154 फॉर 5। (156 for 5 at the end of 17 overs. ठीक रोड के उस तरफ एक मिसल वाला है, वो मिसल वाला भी बोल रहा है मिसल का तैयार है रस्सा और पापड़ किया है फ्राई। ध्रुवित को आउट करने में करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा ट्राई। 43 रनों की भागीदारी, 43 रन्स पार्टनरशिप, एंड दिस कैन बी अ मैच विनिंग पार्टनरशिप, बिलीव यू मी। 156 फॉर 5। समीर शाह 3 ओवर 36 रन। नया ओवर अब संजू श्रीवास्तव द्वारा किया जाएगा। संजीव श्रीवास्तव ने 2 बार आज रनआउट किया, 2 विकेटें भी ली है। 5 में से 4 विकेट में संजीव श्रीवास्तव इन्वॉल्व है, 2 उनके खाते में, 2 टीम के खाते में।
और यहां पर एक और विकेट संजीव श्रीवास्तव को मिलती हुई तीसरी सफलता और आउट हो गए वहां पर ध्रुमिन शाह। संजीव श्रीवास्तव आते ही देखिए उन्होंने अपनी टीम के लिए 24 कैरेट सोने जैसा विकेट हासिल किया। और सबसे बड़ी बात है कि विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट करवाना। सीम के सहारे कटती हुई गेंद और बाहरी सिरा करणराज जवेरी के लिए आसान कैच। जो भागीदारी बन रही थी वो अब टूट चुकी है। ध्रुमिन 34 रन बनाकर आउट हुए। नए बैटर है धैर्य कोठारी। संजीव श्रीवास्तव ने अपना नाम कमा लिया है। 3 विकेट्स लिए हैं और अभी भी उनके पास 11 गेंदें बची है। क्या टूर्नामेंट का पहला फाइफर हम देखेंगे? सीम के सहारे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ही इज अ ब्रिलियंट सीमर। $156 for 6। Wide ball, 157 for 6। Wide ball, 158 for 6। संजीव श्रीवास्तव अचानक ही लय में चल रहे थे और अब लय थोड़ी सी बिगड़ती हुई। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच लगाया और ये गेंद भागती हुई रफू चक्कर हो गई। एलाइट डिजिटल चौका। नए बैटर है आनंद। एक और बढ़िया शॉट वहां पर। बैटर है दर्शिल जवेरी मेरे ख्याल से, डीजे। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर। सिंगल। $165 for 6। वाइड बॉल। बिल्कुल देखिए अब संजीव श्रीवास्तव भी गेंदबाजी के सारे गमापा को भूल चुके हैं। इतनी लय में गेंदबाजी हो रही थी, अचानक ही अब वो अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। इस बार हवा में उठाया था, 1 रन जरूर मिलेगा। कवि शायद दौड़कर 18 ओवर का खेल समाप्त। $167 for 6। आखिरी 2 ओवर बाकी है। संजीव श्रीवास्तव 3 overs 23 runs and 3 wickets। अब नया ओवर लेकर आ रहे हैं
कविश जवेरी, ध्रुवित आउट हुए, ध्रुमिन बाकी है। करेक्शन, 35 पर खेल रहे हैं ध्रुमिन। अभी तक कोई भी बैटर ने अर्धशतक नहीं पूरा किया है। क्या ध्रुमिन आज वो सपना पूरा कर पाएंगे? ओवर पिच बॉल थी और इस बार खेल दिया आसमान में, हिलकोरे खाती हुई गेंद अब जा रही है वहां पर। एक रन पूरा किया, दूसरे की दौड़, और ये दोनों रन ध्रुमिन के नाम पर। ध्रुमिन पहुंचे 37 पर। टीम 169 फॉर 6। ओवर पिच बॉल की जगह पर खड़े रहकर खेलते हुए एक रन पूरा किया ध्रुमिन। अब 38 पर पहुंचे। टीम 170 फॉर 6। देख, एक रेयर कॉम्बिनेशन, बॉलर भी जवेरी, बैटर भी जवेरी, विकेट कीपर भी जवेरी। और ड्राइव करते हुए डीजे, एक रन पूरा किया। दूसरा लेना चाहते थे वहां पर, तेज कदम भागते हुए दूसरे को पूरा कर लेंगे। जब मोहित चतुर्वेदी 0 पर आउट हुए, उसके बाद जो ये स्कोर बना है, मोहित स्वयं भी थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं कि यस, टीम अगर अच्छा खेल रही है वही बड़ी बात है। इस बार खेल दिया ऑन साइड पर एक रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 173 फॉर 6। और जो ऑल सीजन पैंथर्स के कोच है, अपने कैप्टन को बता रहे थे 175 180 का ट्रैक है, वही स्कोर होने जा रहा है। इस बार एक तगड़ा शॉट, एक रन और ध्रुमिन के खाते में। ध्रुमिन पहुंचे 39 पर। एक मैराथन पारी कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है अपना विकेट बचाकर खेलना। उन्होंने कोई भी खराब शॉट नहीं खेला है। 174 फॉर 6। एक रन और, 175 फॉर 6। एंड ऑफ 19 ओवर्स। कविश पराग जवेरी 4 overs 27 runs and no wickets. Last over of the first innings. और इसको लेकर आ रहे हैं संजू श्रीवास्तव। क्या संजू श्रीवास्तव अब इस आखिरी ओवर में 180 के नीचे रख पाएंगे? अगर 180 भी बनता है तो रिक्वायर्ड रन रेट 9 का आ जाएगा। लास्ट ओवर संजीव श्रीवास्तव। श्रीवास्तव अब तक के सबसे कामयाब खिलाड़ी रहे इस मैच में। ऑल सीजन पैंथर्स के लिए 2 रनआउट डायरेक्ट हिट पे किए, 3 विकेटें भी ली है। संजीव श्रीवास्तव का जवाब नहीं। कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव, एक्टिंग में इनकलाब श्रीवास्तव यानी कि अमिताभ बच्चन। और लेकिन वाइड बॉल कर दी यहां पर करण राज जवेरी के लिए। बहुत मुश्किल था इसको रोकना। फुटबॉल के गोलकीपर की तरह छलांग लगाती हुई गेंद जा रही है पीछे। टोटल 3 रनों का बोनस और एक अतिरिक्त गेंद अंपायर श्री रामकृष्णन द्वारा। संजू श्रीवास्तव थोड़ा रनअप पर, मेरे ख्याल से रनअप पर बराबर से वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। बैटर है दर्शिल। फिर से वाइड बॉल। वाइड बॉल धूम्रपान की तरह है,
धूम्रपान न करे न करने दे, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। वैसे वाइड बॉल भी है, न करे न करने दे, वाइड बॉल पड़ेगा महंगा। अब आखिरकार ये विकेट गिरता हुआ दर्शिल झवेरी कैच आउट होते हुए विकेट मिला संजू श्रीवास्तव को। दर्शिल झवेरी डीजे आउट हो गए और ये कैच वहां पर अंजाम दिया गया। बहुत हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, लेकिन मजा उसी का है, हाई स्कोरिंग गेम, एवरीवन वांट्स रन। क्रिकेट मैच में अब नया मोड़। बैटर है कुणाल, संजू श्रीवास्तव 27 रन देकर 4 विकेटें ली है, लेकिन जो वाइड बॉल उन्होंने किए हैं वो भी गिने जाएंगे। क्या ये 5वां विकेट? जी आप, पहला फाइफर इस टूर्नामेंट का संजू श्रीवास्तव के नाम, और 5 में से उन्होंने 3 खिलाड़ियों को विकेटों के पीछे कैच आउट करवाया। क्या जबरदस्त डाइव करण राज झवेरी की, और संजू श्रीवास्तव बिल्कुल अब राजू श्रीवास्तव और इनकलाब श्रीवास्तव यानी कि अमिताभ बच्चन की तरह फेमस हो चुके हैं। कितना बढ़िया लेग कटर और बल्ले का मोटा सिरा, और करण राज झवेरी ने कैच ले लिया। 5वां विकेट मिलता हुआ संजू श्रीवास्तव को। नए बैटर है रचित, 7वां विकेट। 179 फॉर 8। संजीव श्रीवास्तव ने 5 विकेट जरूर लिए, लेकिन वाइड के जो रन्स है वो कंट्रोल करते तो इसका मीठा स्वाद और ले सकते थे। कोई बात नहीं, 179 फॉर 8। इस बार पंच लगा दिया, लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई गेंद, कभी झवेरी का थ्रो। स्कोर 180, 180 फॉर 8। बहुत बड़ा स्कोर है, मैराथन स्कोर। वन 180 फॉर 8। बहुत ज्यादा स्कोर, लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्कोर चेज नहीं हो सकता। इट इज डूएबल, गेटेबल, अचीवेबल। लेकिन इस वक्त मैच को डोमिनेट कर रहे हैं लेपर्ड्स। इनसाइड आउट बॉल काफी समय हवा में रहेगी। कविश वहां पर जाते हुए कम से कम 2 रन बल जाएंगे वहां पर। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 182 for the loss of 8 wickets. दूसरा भी पूरा कर लेंगे।
What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. Good afternoon, friends, and once again, welcome all of you here at WRSA Mahalakshmi Cricket Ground. And the occasion is GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. Highest score of the tournament posed by Sapient Leopards, 189, and 190 is the magic number. And it will be a Herculean task to chase down the score. I welcome all the distinguished guests, dignitaries, and managing committee members of Cricket Committee, as well as the managing committee of GCH. You guys have put up a brilliant show and shown to the whole world what GCH can do. So congratulations there. We are especially thankful to our title sponsors, Billmart, that's it. Apparel sponsors, JK and Company, Cricket Ball by Eagle Infra Industries Limited, Caps by Neo Designs, Fours by Light Digital, Sixes by Samir Pete, Man of the Match by Stainless Designer Studio, Wicket Pads Sleeves by Beetle Leaf Company, and special thanks to Venture Catalyst Group, who are a team sponsor for Sapient Leopards. So Kavish, Parag, Zaveri and Bhavik Shah are the two openers. We also welcome owner of All Seasons Panthers, Mr. Kiran Shetty, and they are sponsored by 99 Pancakes. On the other hand, Sapient Leopards are owned by Rachit Bakshi, and their sponsors are Venture Catalyst and SBI Mutual Fund.
Although the task is Herculean, it can still be done. Very panoramic view of this ground in the background. Kavish Parag Zaveri will be at the striker's end, and at the non-striker's end is Bhavik Shah. And first over will be bowled from WRSA Pavilion end. Vismay Choksi is the bowler. Vismay Choksi will bowl the first over. Well, Vismay and Kavish Parag Zaveri, they play Jain community cricket together, and they know each other's strengths and areas of opportunities very well. So we are in for a good match of cricket. Kavish Parag Zaveri, the batter to face Vismay Choksi. Power play, chasing down 190. Power play would be very important. 6 overs score would probably the differentiator in deciding the winner and the loser of this match. But at the end of the day, it is the game of cricket that will win. So everything 0, 0, 0, 0. That's like a love all in badminton and lawn tennis. Everything 0. Vismay Choksi. First delivery, quickish and played on the onside. A leg by. Single. Vismay Choksi has some very good matches against his name. Has won a lot of man of the matches, won the tournaments. It will be interesting how lefty Bhavik Shah plays against him. Righty-lefty combo. Majority of the teams have fielded righty-lefty combo as their openers in this tournament. Wide outside the off stump. Score 2. Young Prithvi Kothari leading this side of Sapient Leopards. Another good delivery. This time drifting away from the left-hander. Good comeback by a wide ball. Score 2 without loss. 190 is the magic number that they will have to chase. So single for Bhavik Shah, decided at the very last moment to go for that run. Score 3 without loss. We are also thankful to the groundsman Vivek Tiwari, who has made this pitch a very lively pitch for both the teams. Bat and bat together, just opening the face of the bat, piercing the gap, but finally finds a fielder at a wideish third man. Kavish Parag Zaveri gets double. Score 5 runs. Vismay Choksi applying some sweat drops on the ball. Oh,
What a delivery that was. Almost a snorter. That was in the air for some time, but nothing to worry as they conclude a single. Power play 6 overs are such that they will have to take some risks. 184 required of 114 balls. A required run rate 9.84. Kavish Parag Zaveri and Bhavik Shah are the two openers. Welcome all the viewers on GCH channel. It's a Saturday, and if you are just back home and tuned to this telecast, certainly watch all the matches during the weekends of November and first week of December. Vivek will bowl the next over. Prithvi Kothari talking to his bowler Vivek. I must thank both the umpires, Mir Thakkar and Sriram Krishnan. Sir Neville Cardus once told that it doesn't make sense playing a game of cricket unless it has got 2 dashing umpires and 22 exciting players. So good job by Mir Thakkar and Sriram Krishnan along with Ganesh Iyer, who is our observer. A very veteran personality, Ganesh Iyer. And very well known in cricketing circles of Mumbai. Kavish this time going for that sweet connection, and it will be Allied Digital 4. You cannot bowl those deliveries to Kavish Parag Zaveri. The first boundary, score now 10. Well, while chasing down 190, they would need at least 10 to 12 boundaries and maybe a couple of sixes. That's how they are going to bridge the gap of 120 balls and 190 runs. I mean, it's a very simple mathematics. Worked on the onside. Single, and they're trying to go for 2 and they will easily complete it. Score now 12. Always in lookout for runs. That's very important. Kavish this time playing towards the whitish mid-off. Slightly uppish, but nothing to worry as there was no fielder in the catching position. Score 13. Without loss. One more on the offside towards gully, and they both are walking for a single. Score 14.
Oh, look at that shot. That is a pure whack, and this will be a light digital 4. Kavish the Cartoos. And he is really like a Cartoos. The moment ball came on his bat, it went like a tracer bullet. 14 without loss. Played behind the square, and this will be Allied Digital 4. Touch and go shot. Exquisite timing. Not much power behind it. Just wristily played behind the square, and Allied Digital 4. They need many more of those. 2 overs, 22 runs. 16 runs came off the over of Vivek. 3 boundaries in this over. Wicketkeeper Dhruvit talking to Kavish. They are good friends. See, that's what the camaraderie has to be good. It doesn't matter whether you are a cricketer from the opposite team, as long as we share a good bonding on the field and off the field. There are a lot of incidents in international cricket as well, where players from 2 opposite teams happen to be good friends. And one biggest example is Sir Ian Terence Botham and Sir Isaac Vivian Alexander Richards. They both played for Somerset County together, but they played for England and West Indies, and they happen to be one of the best friends forever seen in cricket. So Dhruvit and Kavish, I think, sharing some bond there. Score 22 at the end of 2. Power of 2. Kavish not out on 18 of 9. Bhavik not out on 2 of 3. Wisma Choksi getting ready to bowl the next over. Required run rate 9.33. So that pressure is always going to be there on all seasons Panthers against Sapient Leopards. Bhavik just opening the face of the bat and giving strike to Kavish. (23). Tomorrow also we have 2 games coming up. Every weekend of November, that's 5th and 6th, and then 12th and the 13th, 19th and the 20th. Beautiful delivery that went past Kavish in a jiffy, collected well by Dhruvit. 26th and 27th of November. And then 3rd and the 4th of December. Score 23 without loss. That ball, kind of an in-dipper. Just a gentle release from his hands. Well, there is a strong batting lineup for all seasons Panthers, but then they will have to all fire today. Kavish played an uppercut, and this will be single. (24) without loss, chasing 190 runs of 20 overs. We welcome all the family members of cricketers who are here with us on the stands.
bright sunshine. Bhavik making a room, and this will be Allied Digital 4. Very easily done. Just using the pace of the ball, opening the face of the bat. The moment it went past gully, it was unstoppable. Outfield is lightning quick, and score now 28 without loss. I'm sure all seasons Panthers have a target in their mind for the power play. Slower delivery and very well fielded. 3 overs, 28 runs. Wismai Choksi, 2 overs, 11 runs. Now 162 required of 102. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. We are thankful to all the 6 teams who participated in this tournament as Vivek gets ready to bowl next over. Jaguars of Triumph Knights, owned by Akshay Bhau, sponsors ABC and Logistics and Viva Group. Sapient Leopards, owned by Rachit Bakshi, sponsored by Venture Catalyst Group and SBI Mutual Funds. Marco Polo Lions, owned by Ritesh Sukhija, sponsors India Gate and Ladu Samrat. Balasino Tigers, owned by Pratik Shah. All Season Panthers, owned by Kiran Shetty and sponsors 99 Pancakes. Start of the fresh over, just tickles past the square leg fence for Allied Digital 4. Fabulous timing. And 4 runs. Just using the pace of the ball. Cheetahs Mumbai Stars are owned by Arman Malik. And its sponsors are AS and DSC BKC. So thanks to all the 6 team owners. I think all seasons Panthers gave away about 30 odd runs more by way of extras. Kavish this time trying to go for a big shot that touches the toe end of the bat, and that will go to the fence for Allied Digital 4. So it's a blitzkrieg by Kavish Parag Zaveri. He's taking those chances and risk, because Kavish Parag Zaveri knows that not taking risk itself is the biggest risk. So take risk. 36. Beautiful delivery this time, forcing the batter to offer the shot. Kavish Parag Zaveri. Oh, what a square cut that was, reminding me of Gundappa Vishwanath, and exquisitely played. Square of the wicket for Allied Digital 4. Score now 40. Kavish the Karthus Zaveri.
That's what you got to. He has cut the bowling to ribbons today. .40 without loss. Kavish on 31 of 17 balls. He has played uppishly. There's no one to catch it. It will be difficult to catch. The ball travels past the side screen but gets just a single. I think everyone thought that it will go out of the park, but at the end of the day, ball stopped and a single added to the score. 41 at the end of 4 overs. Vivek 2 overs 29 runs. Kavish 18 balls 32. Bhavik 6 balls 7. Required run rate has come down to 9.31. 149 required of 96 balls. It's a brisk start. Oh, what a delivery. There's an appeal. Vismay completely unplayable, unhittable on that delivery. Kavish Parag Zaveri bowled the similar deliveries to Vismay when he was batting. So that is exactly the return gift that he has given. तू मने चेंज ऑफ पेस नाखसे तो हूँ पण नाखीस. That's the challenge that he has given. 41 without loss. 5th over. Another good delivery, taking off from the off stump. Consistently bowling towards one side of stump definitely is an art. Vismay Choksi is trying to pitch the ball up. 41. Another beautiful delivery. Choksi looks so rhythmic when he bowls today. I think he is the spearhead of the bowling attack of Sapient Leopards. Excellent wicket keeping behind the stumps by Dhruvid. Lower full toss. Finding the gap between the two fielders, and that will be Allied Digital 4. Very easy picking. You cannot bowl full tosses to Kavish Parag Zaveri. He will bat on and on and on till cows come home in the evening. Those kind of bowling is not allowed. And I think advantage conceded to all seasons Panthers by Vismay. 45. A good looking square cut but brilliantly stopped. No, he can't stop it. Another glorious shot, and this will be Allied Digital 4. Runs, runs and runs. He's so strong square cutting the ball. The game is on. Definitely the game is on. Kavish Parag Zaveri has sent out a strong message to the opposition.
Single to Kavish. He's on 41 and 50 up in 5 overs. 50 without loss at the end of 5 overs. Will this be a wicketless power play? Let's wait and watch. Last over of power play. Wismay Choksi, 3 overs, 20 runs. And I guess first bowling change, Drumin, who was the highest scorer. He remained not out on 43. Drumin for his side. Highest individual score is Dinesh Patel of Balasino Tigers, 44. Kavish Parag Zaveri has a golden chance to go past that milestone. But then we know Kavish individual records doesn't matter. Drumin to bowl to Kavish Parag Zaveri. 50 without loss at the end of 5. 140 required. Piyush Meghani fielded the ball. Meghani is a very powerful surname in Gujarat, reminding me of Zaverchand Meghani, the noted poet. Oh, look at the way he has played that shot, an agricultural shot, and this will be 2 runs, and now they are going in for 3. These shots reminding me of Javed Miadad, score 53. Kavish Parag Zaveri has now become the second highest joint scorer individually with Dinesh Patel. Dinesh Patel scored 44, Kavish is on 44. And look at Bhavik Shah, he's on 7 of 6. 4 more balls to go in power play. Wide by Mihir Thakkar. 54. Bhavik Shah. So an appeal, and finally game begins again. 54. Current run rate is 9.82, required run rate 9.07. On the pads of batter played behind the square, they will take at least 2 if not more. Kavish also understands Bhavik's limitations and hence restricted himself for 2. But that is what is very important. You give equal importance to your partner's runs. It's a team game. There is a beautiful saying in cricket, teamwork makes dream work. .56. Wide ball, 57. Wide ball can become a villain in the end result for both the sides. Single.
So this is the highest partnership record for any wicket, and also the first wicket, of course, 58 without loss. Will this be a wicketless power play? Last ball of the power play to be bowled by Dhrumin, and batter facing him is Kavish Parag Zaveri. Wide ball, 59. GCH Cricket Super League, you can see the sticker on the stumps. Yes, and it is. Out of all the 4 innings today, this is the first wicketless power play. 59 at the end of 6 overs. Dhrumin 1 over 9 runs. 84 balls, 131 to win. करंट रन रेट 9.83 और रिक्वायर्ड रन रेट 9.36. पावर प्ले क्योंकि खत्म हुआ है, इसलिए अब रन उतना आसानी से बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कविश पराग जवेरी जिस तरह खेल रहे हैं, वाकई में जवेरी ने जेवरों के चमक दमक सा क्रिकेट खेला है. और अब कैप्टन आ चुके हैं पृथ्वी कोठारी. स्कोर 59 विदाउट लॉस. पृथ्वी कोठारी ने बहुत ही लाजवाब पारी खेली, 41 रनों की. जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला था, पृथ्वी कोठारी को देखने से पहले 2 ही तो पृथ्वी हिंदुस्तान में फेमस थे. एक जुहू का पृथ्वी थिएटर और पृथ्वी शॉ, और बॉलीवुड में पृथ्वीराज कपूर साहब, जिन्होंने मुगले आजम में जो रोल अदा किया आज भी लोग भूले नहीं हैं. नए ओवर की पहली गेंद कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए भाविक शाह ने 1 रन लिया. स्ट्राइक दी कविश को. स्कोर 60 रन. 130 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए. आज के पहले मैच में बालासिनोर टाइगर्स ने पराजित किया मार्को पोलो लायंस को. 6 विकेट से वो विजय हासिल की. दिनेश पटेल उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे. आज के दूसरे मैच में भी आप काफी अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं दोनों टीमों द्वारा. सेपियंट लेपर्ड्स को बैटिंग के लिए बुलाया गया था और 189 रन उन्होंने बनाए. 190 की चुनौती. कविश ने शफल होकर खेल दिया. शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ है, और खेल दिया फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर. अलाइड डिजिटल उम्दा चौका. बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखने को मिला वहां पर. दुबले पतले छरहरे बदन के कविश पराग जवेरी पतला है पर गर्म है. 64 रन्स. इस बार बहुत बड़ा रिस्क लिया था. तीनों स्टंप खोल दिए थे. आउट होते होते बच गए. तीनों स्टंप खोलकर रखना मतलब अपने लिए तकलीफ को निमंत्रण देने वाली बात थी. 64 विदाउट लॉस. बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार. टप्पा खाकर बाहर की जानिब कटी. स्कोर अभी भी 64 पर. 126 रन और चाहिए. 126 स्टिल टू विन. और इसके साथ ही एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं. कविश पराग जवेरी अर्धशतक से 2 रन पीछे, लेकिन इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाते हुए
खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी, क्रिकेट के साथ ईमानदारी वाली पारी जिसने खेली वो है कविश जवेरी। पृथ्वी कोठारी स्टंप टू स्टंप गेंद थी और सीधी सटीक गेंद पर LBW पगबाधा की अपील और आउट हो गए कविश पराग जवेरी। पृथ्वी कोठारी ने बहुत जबरदस्त झटका दिया है। कविश द कारतूस जवेरी लेकिन पृथ्वी कोठारी को भी मानना पड़ेगा, सुबह चाय के साथ मारी, दोपहर को कॉफी के साथ खारी, और ये दोनों के साथ अगर गेंदबाजी करता हो पृथ्वी कोठारी तो मजा आ जाए। एक कोठारी सब पर भारी, जिसने पहली पारी में एक कैप्टन का प्रदर्शन क्या होना चाहिए वो बताया है। 41 रन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लिफ्ट का काम किया, गेंदबाजी कर रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर बने हैं। 64 for 1। नए बैटर है हर्ष एन संघवी, इस बार स्क्वायर कट कर दिया और WRSA की मखमली घास पर आग लगाने वाला एलाइट डिजिटल चौका। बैटर हर्षल है, हर्षल शाह। 7 ओवर 68 रन, 7 ओवर 68 for 1। $122 required of 78 balls। पृथ्वी 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। देखिए जब खेल की शुरुआत हुई 120 बॉल में 190 चाहिए थे, 70 का गैप था, वो घटकर 60 का हुआ, फिर वो घटकर 50 का हुआ और अब केवल 44 का फर्क है रन और बॉल के बीच में। 68 for 1। जो 44 का गैप है उसको 40, फिर वहां से 35, फिर वहां से 30, इस तरह नैरो करते जाना होगा, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि गेंदबाजी करने आ चुके हैं ध्रुमिन। सीम के सहारे कटकर अंदर की जानी आई थी गेंद, इस बार रन को पूरा किया गया है, देखना है। लेग बाय अंपायर मिहिर ठक्कर द्वारा। स्कोर 69 for 1। हर्षल शाह, वो लचीलापन है, वो शालीनता है हर्षल शाह में। ओपनिंग बैटर के रूप में भी आ सकते हैं, वन डाउन बैटर के रूप में भी आ सकते हैं। वाइड बॉल। $70 for 1। 120 रन और चाहिए। बॉलर्स बैक ड्राइव, बिंदी गेंद। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCS क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1। इस बार ड्राइव किया है ऑन साइड पर, 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज विकेट की अहमियत को जानते हैं। कविश ने एक अच्छी बुनियाद रखे और अब कविश ने रखी हुई बुनियाद पे अब रन बनाने होंगे तमाम बल्लेबाजों को।
72 for 1. हम आभारी हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिलमार्ट, एपरल स्पॉन्सर्ड बाय जेके एंड कंपनी, क्रिकेट बॉल्स बाय ईगल इंफ्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पारी भाविक शाह खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर। 72 फॉर 1, 72 रन एक विकेट के नुकसान पर। 190 रनों का पीछा करना है, बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन अगर स्कोर बड़ा है तो उसके लिए कमिटमेंट भी बड़ा होना चाहिए, और वो बड़ा कमिटमेंट हर्षल शाह को आज देना होगा। सिंगल,
गरवारे क्लब हाउस के इतिहास में पहला ऐतिहासिक लम्हा इस बार निप बैकर बॉल थी, सीम के सहारे अंदर कटी और 1 रन। बहुत ही जबरदस्त काम मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया गया है। जीसीएच के क्रिकेट को पुनर्जीवित करने का प्रयास। 74 for 1। It's an over. 8 overs, 74 for 1. ध्रुमिन 2 overs, 14 runs. भाविक 13 गेंदों में 13 पर खेल रहे। हर्ष 4 बॉल 6। रिक्वायर्ड रन रेट 9.67। 116 रन चाहिए 72 गेंदों में। पृथ्वी कोठारी स्वयं अब एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए। युवा और जोशीले कप्तान हैं पृथ्वी कोठारी। छोटी सी एडजस्टमेंट, दर्शिल जवेरी डीजे को अब आउटफील्ड में लाया है लॉन्ग ऑन पर। एक रन, अंतिम समय पर यह रन हो पाया। जहां कोई गुंजाइश नहीं थी वहां रन मिलना, ये अच्छी बात है। रनों का अंबार लगाते रहना होगा क्योंकि बड़ा स्कोर है। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से भी अंपायर्स को काफी शफल होना पड़ रहा है। क्षेत्ररक्षण में तब्दीलियां और इसमें लगने वाला थोड़ा समय, ये तमाम बातें हमारे मैच ऑब्जर्वर गणेश अय्यर साहब की नजरों से छुपी नहीं है। एक आसान रन डीजे के पास। 76 for 1। पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही यहां पर विकेट लिया। कोठारी को मिलती हुई दूसरी सफलता। गेंद सीम के सहारे अंदर की तरफ कटी। अफलातुन निप बैकर और भाविक शाह का जो डिफेंस था, मानो गेंद ने बल्ले को खुलजा सिम सिम कहा और वहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। बड़े विकेट का पतन। भाविक शाह भी अच्छा खेल रहे थे, अब एक नए बल्लेबाज को आना होगा। पृथ्वी कोठारी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अपना लोहा मनवाते हुए राउंड द विकेट आए थे लेफ्टी बैटर के लिए। और अब नए बैटर आ चुके हैं अंकित। 76 for 2। एक छोटी सी टीम मीटिंग वहां पर सेपिएंट लेपर्ड्स द्वारा, जब तक नया बल्लेबाज आ रहा है। ये खिलाड़ी अपनी प्यास बुझाते हैं, पीने का पानी, एनर्जी ड्रिंक्स। पानी अमृत की तरह है। हर एक टी शर्ट पर आप देख सकते हैं बिलमार्ट और जेके एंड कंपनी। इन एवरी हार्ट, इन एवरी पार्ट देयर इज बिलमार्ट।
गौतम भाई शाह आज हमारे साथ सुबह में उद्घाटन के समय उपस्थित थे। कोठारी का सामना करेंगे अब अंकित। दायरे के बाहर वाइड बॉल, अंपायर श्री राम कृष्णन द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 फॉर 2। बेहतर बॉल थी, बल्ला और पैड साथ में रखा था। कोठारी स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वाइड नहीं करते। सो दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, बॉल स्टंप टू स्टंप। ऐसा दिखाया कोठारी ने आज। अपील की जा रही है वहां पर, लेकिन उसको दरकिनार किया अंपायर श्री राम कृष्णन ने। 1 रन जरूर आएगा। बल्ले से लगी है। 78 फॉर 2। आज संजू श्रीवास्तव ने इतिहास लिखा जब 5 विकेटें एक पारी में ली। फाइफर जिसको कहा जाता है, फीफर, फाइफर, अलग अलग उच्चार हैं। विकेटों के सामने। और ये जो फाइफर टर्म है, ये अगर गूगल में जाके आप चेक करते हैं, सो 9 ओवर 79 फॉर 2। 66 गेंदों में 111 रन अब चाहिए। ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स अगर आप देखते हैं गूगल में जाकर, तो फाइफर के लिए लिखा गया है कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस मिशेल फीफर, उसके नाम से वो फाइफर ये शब्द आया है। ध्रुमिन अपना तीसरा ओवर करेंगे। पृथ्वी कोठारी 2 ओवर 14 रन, 2 विकेट। अपने दोनों ओवर में 2 विकेटें ली है पृथ्वी ने और मैच जीतने के दरवाजे खोले हैं। लेकिन अन्य गेंदबाजों को पृथ्वी के इर्द गिर्द गेंदबाजी करनी होगी और उसमें का एक योद्धा ध्रुमिन। नए ओवर की पहली गेंद उठा दिया है। गेंद के नीचे आते हुए वहां पर क्षेत्र रक्षक डीजे, वहां पर उनके हाथ से कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा और एलाइट डिजिटल चौका। हर्षल शाह ने भी अपने मन में वो चौका लगाते गाना गाया होगा जो बहुत फेमस हुआ था, मौका 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 मौका। मौका आ गया। एलाइट डिजिटल 4। लय बिगड़ती हुई वाइड बॉल। बिल्कुल ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप चौका छक्का खाते हैं उसके बाद वाली गेंद पर अपनी लय को बिगड़ने ना दें। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 फॉर 2। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन। 85 पे 2, 85 फॉर 2। $64 balls, 105 runs to win.
64 balls, 105 to win. और यहाँ पर अब विकेट कीपर ध्रुवित जाकर बात करते हुए, यस हाँ, ध्रुवित ने देखा कि जरूरत से ज्यादा फील्डर अगर मैदान में हैं तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां गणेश अय्यर बैठे हैं और दो ही चीजों पर हमें नाज है, एक निर्मा सुपर और गणेश अय्यर की नजर। बढ़िया गेंद थी इस बार, मिडिल स्टंप पर आती हुई। देखिए 190 रन चेस करना आसान काम नहीं है, लेकिन उसे किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात यही है। जब तक नील आर्मस्ट्रांग चांद पर नहीं गए थे, सबको लगता था कि चांद पे कोई जा ही नहीं सकता है। वाइड बॉल, 86 पे 2, 86 फॉर 2। 10वां ओवर, बहुत अच्छा पिच यहां पर दिया है हमारे क्यूरेटर विवेक तिवारी ने। एक और वाइड बॉल, पहली पारी में भी वाइड बॉल, दूसरी पारी में भी वाइड बॉल। 87 फॉर 2। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, ड्राइव कर दिया, वहां पर गेंद को रोकने के लिए एडी चेट्टी का जोर लगा दिया था, वहां पर चौका बचा लिया है, 3 रनों की बचत की है। बचाया गया रन ये बनाए गए रन के बराबर है। 88 फॉर 2, 102 रन और चाहिए। हर्ष 8 बॉल 13। हर्षल पहुंचे 14 पर, टीम को पहुंचाया 89 पर। 89 फॉर 2, 101 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत अच्छा रनों का पीछा चल रहा है, हिम्मत नहीं हारी है, सबसे बड़ी बात है हिम्मत नहीं हारना। फ्लिक कर दिया, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए 1 रन और, स्कोर हो गया 90, 90 फॉर 2। अब 100 रन और चाहिए बचे हुए 10 ओवर में। $100 required of remaining 10 overs. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League 2022. Is the first season and successful season. They say in English that first impression is last impression, and it's an impressive start to the tournament today. 4 teams have played today. We will see 4 more teams tomorrow. Of course, there are a total of 6 teams, 18 matches. It's still very hot out there, and Sameer Pankaj Shah went ahead with some liquid for his batter. Captain himself doing that thing. Yesterday we saw Aaron Finch doing that once he got injured for Australia. A bowling change. Drumin 3 overs 25 for no wickets. Left arm over the wicket, giving it the loop, the flight. Left arm over the wicket.
Ankit pushing it in front of the square for single. "91 for 2. All seasons Panthers taking on Sapient Leopards. Played very late. Harshal and will try to go for 2. We have seen lions, we have seen tigers, we have seen leopards, we have seen panthers. Tomorrow you will see cheetahs and jaguars. That ball came in sharply. Bowler Anand is coming in left arm around the wicket. Harshal played it on the onside. 94 for 2. This time it was ballooned in the air, but in the safe zone, Darshil Javeri stops it. 95 for 2. 11 overs, 95 for 2. Required run rate has gone up now, 10.56. 95 more required of remaining 9 overs. So this is a bit of concern now, as required run rate has gone up to 10.56. 54 balls, 95 to win. One more bowling change as Josefa gets ready to bowl. Josefa is going to bowl from the far end. Looks like Chris Harris of New Zealand. When New Zealand had an army of military medium bowlers at one point in time, Chris Harris, Nathan Hassel, Dion Nash, Roger Toos, who could bowl military medium, and they were quite successful under players like Martin Trove and Stephen Fleming, and of course Chris Keynes. So Josefa will be bowling. Hosey. It will be interesting how these two batters face him. This time starts with a leg stick line. Lot of changes have happened in cricket ever since it started. The only thing that has remained unchanged is 22 yards pitch. Brilliant delivery, taken by surprise. Josefa is not trying to bowl quick, he's just trying to release the ball and allowing that sim to do the trick.
Single for Harshal and single for Panthers. This is an excellent game. It's like a tug of war. Both the teams have not given up. They are hopeful, optimistic. Now look at that shot. Whacked it. No one would stop it. And that goes past long of fence for Allied Digital 4. First aggressive shot from the bat of Ankit. He waited for it and went for it. Score 97 for 2. 101 for 200 up on the board. Oh, the ball has disappeared. Ganesh Iyer now watching that incident. I think the ball has gone through some heating treatment. We'll have to see whether it is in playable condition or not, because it went inside a bunch of grass, and Ganesh Iyer straight away on the ground as match observer. He's the subject matter expert and trying to check with the umpires. Umpires are so yeah, all is well is the signal from Mihir Thakkar. कितना हो गया? 101 for 2, 89 more to win. Ankit goes for a backhand, succumbs to the pressure, an easy picking there. And what a catch that was. Was it required? Ankit already scored a boundary a few minutes ago. And went for another big one and an easy catch. Piyush Meghani took that catch. Just when everything looked so good for Panthers, Ankit gets out for 10 runs. Nothing wrong with the stroke, but then it went straight. I mean, he could have gone above the head of the fielder, but couldn't get the elevation, and good catch. You can't say it was a blinder, a very well anticipated catch, but it was quick. Newman in. Karan Raj Zaveri, the wicketkeeper come batter. Karan Zaveri. He is one never say die attitude cricketer, and he will have to build an innings full of character today, because it is only the character that makes you a great cricketer. Karan. Has bowled him. So I think it was, it was Sanju. Correction, Sanju bamboozled by Huzaifa. Huzaifa. The Chris Harris of this team.
Third wicket gone. I think they still have few good batters. In Harsh Sanghvi is there. They have got Karan Raj Zaveri. Samir himself can bat. Lot of options, and I think now we are seeing Harshal Shah still there. (101 runs). Newman in his Leauge. 12 overs, 101 for 4. Last 2 overs have gone in favor of Sapient Leopards. Huzefa 1 over 6 runs and 2 wickets. Today we have seen a lot of matches, or rather bowlers in 2 matches claiming 2 wickets in 1 over. Trying to find the gap, plays squarishly for single. 102 for 4. 88 runs to win the match. From here, not going to be easy. Required run rate creeping up. I think Prithvi Kothari also had used his cricket acumen. He bowled just 2 overs, got 2 wickets, and then invited his other bowlers. That's a smart move. That was a bad ball and punished past the fine leg fence for Allied Digital 4. That was more like a teaser, teasing the batter, and Leauge went for that Allied Digital 4. 106 for 4, 84 required to win the match. 13th over. Wide ball, 107 for 4. For the first time, current run rate has gone below 9. There was an appeal and he survives. Leauge. Single. So it's all about nudging and maneuvering the ball right now. But you can't keep nudging it all the time. 107 for 4, 80, or rather 108 for 4. Required run rate now 10.70. Harshal goes for a big one, and it will be interesting to see whether he gets out. No, I think he survives, but they will take 2 runs here. Certainly that went skyrocketing. 110 for 4, 80 to win. Harshal on 21 of 16. A nice little innings by him. Once again steps forward and plays it in the gap, and this will go to the fans for Allied Digital 4. Majestic timing, good use of feet against this spinner.
114 for 4 at the end of 13. Harshal Shah on 25 of 17. Neeraj on 4 of 3. Current run rate 8.77. Required run rate 10.86. Josefa to continue. Josefa brings in that refreshing feeling. Very live wire in the field. Body language looks very positive. If you want to judge body language of any team, you should look at their fielding. Because bowling and batting is more of an individual affair. But it is the fielding that will tell you what the body language is. This time driving it for a single. $115 for 4. Full toss ball and giving it a whack. That was a super shot. And Allied Digital 4 for Harshal Shah. $119 for 4, 14th over. Required run rate has dropped. Oh, that was a ruby cut. Took the inside edge. Very lucky to have survived. It could have touched the stumps. Many a times you see this kind of shots, the lemon cuts or the Chinese cuts or the ruby cuts. And in English county it is called Staffordshire cut. Beautiful delivery, nice carry to the keeper, Dhruvit. Over pitch ball, very easily played for single. 120 for 4. 70 runs required. Wide ball, 121 for 4. Required run rate 11.05. Another wide. $122 for 4. These wides can be costly. Beautifully punched past the extra cover fence. There is a fielder who is trying to stop it, but they will gather 2. $124 for 4 after 14. Current run rate 8.86, required run rate 11. 6 overs and 66 to win. Remember when we started 120 balls, 190 runs, difference of 70, and that is narrowed down very well. 36-66, difference of just 30. But how to bridge this gap? The stroke selection matters the most. And there comes once again Prithvi Kothari. 2 overs, 2 wickets for him. He's the partnership breaker. Josefa
2 overs, 16 runs, 2 wickets. This time punched off the back foot, finds a fielder near the ropes. Single for Harshal. 125 for 4. 65 required of 35. This situation certainly demands a presence of mind from both the teams, as they know one mistake and it could be the other way. So no one would want to make a mistake and lose out on this game. Played with soft ends and single. They are going in for 2. Leauge sprinting in. $127 for 4. Harshal on 31 of 22. Leauge on 9 of 6. 15th over. That was on the pads, I guess. A single, yeah, like by umpire Sri Ramakrishnan. 128 for 4. Played upishly, a chip shot and single. $129 for 4. Guided on the onside for single. 130 for 4. 15th over. Angled across for single. 131 for 4 at the end of 15 overs. Required run rate now mounting up 11.80. 30 balls and 59 to win. 30 गेंदों में 59 रन चाहिए. नए ओवर करेंगे हुजैफा. $29 balls, 59 runs. Wide ball, 29 balls, 58 runs.
इस बार रन पूरा किया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 133 पे 4। तगड़ा शॉट है इस बार, देखना होगा कम से कम 1 रन मिलेगा। कई बार स्ट्रोक अच्छा रहता है लेकिन प्लेसमेंट फील्डर के पास रहने की वजह से ज्यादा रन नहीं मिल पाते, और वही चीज यहां पर देखने को मिली। 134 पे 4। खराब बॉल थी और नटराज मुद्रा में उसे खेल दिया, नो बॉल, फ्री हिट, और ये लगा हाईलाइट डिजिटल चौका। हर्षल ने वाकई में जैसे ही देखा नटराज की तरह अपना बायां पैर ऊपर किया, नो बॉल आया, खुशियां लाया। नो बॉल क्या कर सकता है, हमने कुछ दिन पहले देखा भारत के लिए। कितना हो गया? 139 for 4। फ्री हिट की बॉल थी, उसे मैदान के बाहर नहीं भेज पाए। 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, वहां पर रनआउट का खतरा है वहां, लेकिन बॉल स्टंप पर लग नहीं पाई और दूसरे रन को पूरा कर लिया हर्षल ने। एक और, यानी कि अब 142 4 विकेट पर। 142 for 4। 48 still required to win the match of 25 balls। गेंद और रन के बीच का फासला और कम होता जा रहा है। मैच बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में। इस बार खेल दिया विकेटों के पीछे, देखना होगा वहां क्षेत्र रक्षक मौजूद, और 1 रन। 143 for 4। 143 for 4। हुजैफा ने अपना एक और ओवर समाप्त किया। 3 ओवर 28 रन 2 विकेट। हर्षल शाह 41 पर खेल रहे हैं, 29 गेंदों का सामना किया है। नीरज 10 बॉल 12, 24 गेंदे 47 रन। 24 balls 47 to win। बयालीस रनों की भागीदारी और नया ओवर लेकर आ रहे अब दर्शिल जवेरी। आमतौर पर देखिए जवेरी जो है सरने में 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, एक जेड से भी और एक जे से भी। तो दर्शिल जो है ये जे वाले जवेरी है। और कविश जो है ये जेड वाले जवेरी है। इस बार जैसे ही टप्पा खाया, मुड़े और उस गेंद को फेंक दिया।
4 रन के लिए एलाइट डिजिटल शानदार चौका। गेंदबाजी के विकल्प लगभग समाप्त से होने जा रहे हैं। शायद ये वजह भी है क्योंकि एक पार्ट टाइम बॉलर के रूप में दर्शिल जवेरी की तरफ देखा गया था। जैसे ही टप्पा खाया, बहुत ही मखमली और मुलायमी चौका। एलाइट डिजिटल 4, 147 for 4, 23 balls, 43 to win. Wide ball, 148 for 4, 23 balls and 42 to win. इस बार आड़े बल्ले से खेला है, 1 रन और, 149 for 4. इस बार खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और ये लगा बेहतरीन एलाइट डिजिटल चौका। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, पूरा समय था हर्षल शाह के पास। बहुत जिम्मेदारी परी, जुझारू पारी। इस बार 1 रन तेजी से पूरा करते हुए वहां पर हर्षल शाह, 150 रन पूरे होते हुए 150 for 4. अब 40 रन और चाहिए। दर्शिल जवेरी ओवर नंबर 17 करते हुए, एक रन और बड़े आराम के साथ खेल दिया था हुजैफा के पास। 151 रन 4 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 155 करेक्शन। इंटरनेट स्कोरिंग थोड़ा स्लो चल रहा हुआ, लेकिन विल कैच अप। बैकफुट पर जाकर खेला, 1 रन पूरा किया हर्षल ने और वहां पर दूसरे की दौड़ लगाते हुए हर्षल डेंजर एंड पर दौड़ रहे हैं। $157 for 4 और हर्षल 48 पर। तो देखिए जो पेनल्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज 167 for 4. So 23 to win now. Officially 23 to win. नया ओवर लेकर आ रहे विस्मय चोकसी। चोकसी को चौकस रहना होगा। $167, 167, जो 10 की पेनल्टी है। वाइड बॉल, 168 for 4. 10 रन पेनल्टी के ऐड करके हम आगे चल रहे हैं। आपके मॉनिटर पे जो है वो लाइव स्कोर आ रहा है, बट 10 रन पेनल्टी ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं हमारे मैच ऑब्जर्वर
गणेश अय्यर साहब ने ये फैसला सुना दिया है। एक रन और। $169 for 4. नो बॉल। अंपायर मीर ठक्कर द्वारा, और इसके साथ ही पहली हाफ सेंचुरी जीसीएच क्रिकेट सुपर लीग के फर्स्ट हाफ सेंचुरियन बन चुके हैं हर्षल शाह। हर्षल शाह के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम वहां खड़े होते हैं जहां रनों के मसले बड़े होते हैं, और जहां मसला बड़ा था हर्षल शाह वहां पर नड़ा था और अपनी टीम के लिए खड़ा था। 172 for 4। बल्ले का बारी सिरा और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। एलाइट डिजिटल चौका। 176। 4 विकेट के नुकसान पर, और 50 की पार्टनरशिप भी हो चुकी है दोनों के बीच में। हर्षल शाह, द वन मैन शो, द सेवियर, द बैटिंग कॉलोसस। ओवर पिच बॉल उठा दिया यहां पर, हवा के साथ साथ घटा के संग संग जाता हुआ ये सुपर 6 समीर पेटे 6। 182 रन। 182 रन 4 विकेट पर। इस बार फिर से बहुत नजाकत और नफासत के साथ खेल दिया है। एलाइट डिजिटल चौका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 भी मिले तो क्या खराब है, लेते रहो। 184 पर 4। 6 रनों की जरूरत है। हर्षल शाह बैठक शॉट लिया इस बार, थोड़ा खतरा जरूर है, लेकिन वहां पर कैच आउट होते हुए बैठक शॉट शरीर से काफी दूर खेले थे, ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना शॉट था, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विजय के बहुत करीब आ चुके हैं। लेकिन एक ऐसी पारी जिसको सलाम करना चाहूंगा, हर्षल शाह को जब देखते हैं तो खुशी मिलती है। नए बैटर है हर्ष संघवी। 190 होने जा रहे। कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा। बल्ला लेकर आया है तो पैंथर्स के लिए रन बना के दिखाएगा, अपना टाइम आएगा। हर्षल शाह मेड इट पॉसिबल। उस्ताद जाकिर हुसैन अगर देख रहे होते तो बोलते, अरे हुजूर वाह ताज नहीं, वाह हर्षल बोलिए। ऐसी पारी खेली है। 64 रनों की, 48 बनाए कविश पराग जवेरी ने, 64 बनाए हर्षल ने, और ये 2 महान पारियों की बदौलत अब मैच जीतने के बहुत करीब आ चुका है। छह रन चाहिए अब बची हुई 12 गेंदों में। और एक बॉल बाकी है। 184 पे 5, but what an innings by Harshal Shah and Kavish.
एक रन ले लिया है हर्ष संघवी ने, अब 5 रन चाहिए। 185 for 5। पूरे जीसीएच में चर्चा है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा जीसीएच क्रिकेट सुपर लीग। थैंक यू बिलमार्ट, वी लव यू बिलमार्ट, दैट्स इट। Only 5 to win now. 189 बनाते वक्त पृथ्वी कोठारी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये मैच बन सकता है, लेकिन यही बड़ी बात होती है क्रिकेट में। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। हमारे बिलमार्ट जीसीएच क्रिकेट सुपर लीग को देखने के लिए आज सुबह से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, 5 से 10 बार मैदान के ऊपर से जा चुका है। हेलीकॉप्टर के पायलट को भी बैठा नहीं जा रहा, वो भी मैदान के ऊपर से लगभग 8 से 10 बार जा चुका है सुबह से। नए ओवर लेकर आ रहे हैं अब पृथ्वी कोठारी की ये फुल टॉस बॉल, नो बॉल, फ्री हिट। एलाइड डिजिटल 4 हो गया ना 190। इट्स अ नो बॉल, एलाइड डिजिटल 4 एंड दे हैव वन इट। 5 विकेट से भव्य विजय हासिल कर ली है। दिस इज मैच ऑफ द टूर्नामेंट, फाइनल के पहले का फाइनल। मुझे पता नहीं फाइनल कैसा होगा, लेकिन इससे बढ़िया मैच क्या होगा। व्हाट अ परफॉर्मेंस, excellent performance, Prithvi Kothari and Huzaifa, of course, Dhruvid, Dhrumin, but it was Kavish Parag Zaveri and Harshal Shah who made it possible. अपना टाइम आ गया और all seasons Panthers छा गया। Good job. They have won this by 5 wickets. I shall request both the teams to join here for post-match presentation ceremony. That was like an international match. Great job by the teams. Finally, it is the game of cricket that has won the hearts of the people. Super tournament in the very first edition. So we are getting ready for post-match presentation ceremony. I should request Mr. Dalal to join us, please.
man of the match is definitely a no-brainer. Harshal Shah, 62 runs of 37 balls, 7 Allied Digital 4s, and 1 Samir Pete 6. Harshal Shah. Super performance, Harshal Shah. Great job, Harshal Shah. Proud of your achievement. And what a cliffhanger of a match. So thank you. Harshal, just one question. Down and the situation was very critical. How did you make this possible? I mean, how you would summarize your victory today? I think it was the start that set us for the entire chase. Kavish and Bhavik gave us a fantastic start. And I had a belief that if we hit one boundary and over, we'll easily chase 190. And self-belief always works, so that's what helped me to score. But I genuinely felt that 5 wickets in a T20 is a very difficult thing. And Sanjeev sir to get 5 wickets, he definitely equally deserved this trophy. Well, definitely, and congratulations to your team. जाते जाते आपके लिए एक ही चीज, जैसा मेरा स्टाइल है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. 190 chase down on the very first day. Congratulations, Harshal Shah. अरे हुजूर, वाह ताज नहीं, वाह हर्षल बोलिए. So dear friends, with this we come to the end of post-match presentation ceremony. See you tomorrow morning. Till then, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai GCH, Jai Cricket.